Okay, so superlative degree means the highest degree, highest quality. All right, the EST form, or where we used most. Look at this example: able, abler, and ablest. So able is the positive degree, means the base form of any adjective. Abler, it is the higher degree, means the comparative degree, which is used for comparison in between two persons, two things, or two animals. And ablest, it is the highest degree, means highest quality, which is used, which is superlative degree, which is used for comparison for more than for more than two persons or two animals or two things. Able, abler, or ablest. Look at this example: he is the brightest student in the class. So here one boy, he is being compared with all the students in the class. So that's why we have used EST form, means superlative degree. This is very much simple for you all because you are already in 8th and 9th. So this is just for the revision purpose. So let's move. Now uses of superlative degree. Uses आपको already पता है. Where we are superlative degree is used when more than two persons or things of same kind are compared. वहां पे टाइप सेम रहेगा, सेम कैटेगरी की चीजों को, दो से ज्यादा सेम कैटेगरी की चीजों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, वहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी. फॉर एग्जाम्पल, शी इज द प्रेटीएस्ट गर्ल इन द टाउन. एक ही टाइप की चीज है, एक ही कैटेगरी की चीज है यहाँ पे जो कंपेयर कर रहे हैं. एंड we are talking only about one person. She is being compared to all the girls in the town. That's why we have used superlative degree, means EST form. Now let's move. Also, और कहाँ भी यूज होती है सुपरलेटिव डिग्री? टू इंटेंसिफाई द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, by far is used before superlative degree. Look at this one. If you want to intensify your comparison, for example, India is by far the most beautiful country of the world. India is being compared with all the countries of the world, and we want to show कि India सबसे ज्यादा beautiful है. हमें यहाँ पे comparison को बहुत ज्यादा थोड़ा सा बढ़ा के दिखाना है, intensify करना है. That's why हमने use किए हैं words by far. किससे पहले? Most से पहले. Excuse me, ma'am. Please write in the chat box. मैम वो चैट बॉक्स में लिखने वाला डाउट नहीं है मैम. Okay, Vedant, yes. So this मैम most मैं ये is कह रहा था कि superlative मैम जो सुपरलेटिव डिग्री है मैम, तो ऑलरेडी मैम सुपरलेटिव है तो ऑलराउंडर के लिए रहेगी, तो मैम उसमें कोई वर्ड ऐड करने की क्या जरूरत है? That is what is that, यही तो यूज है ना. That is what we are studying, Vedant. Look, to intensify the degree of comparison. एक आप नॉर्मल कंपैरिजन कर रहे हैं, एक आप अपनी डिग्री को, अपनी कंपैरिजन को थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा के दिखाना चाहते हैं. तब आप ऐसे भी बोल सकते हैं इंडिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज ऑल्सो ओके, बट वो डिपेंड कर रहा है ना कि आप किस सेंस में अपना सेंटेंस लिख रहे हैं. फॉर एग्जांपल, यू आर राइटिंग एन एसे ऑन इंडिया एंड आप इंडिया की अच्छी अच्छी क्वालिटीज के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में बता रहे हैं. आप अपनी सेंटेंस को इस तरह से मोल्ड करना चाहते हैं, तो ये उन सब के लिए ये यूज होते हैं. ये मैंडेटरी नहीं है. दिस इज नॉट मैंडेटरी टू यूज बाय फार, बट यू कैन यूज इट. ओके, ही इज बाय फार the best boy in his class. All right, so this is also the use. Now look at this one. Always avoid the use of double superlative. Generally हम क्या करते हैं? Double superlative का use avoid करते हैं. We should avoid it. For example, he is the most and strongest boy in the class. So this is one superlative, most, and this is another. So there is no need to use two superlatives. He is the strongest boy in the class. That is totally fine. Okay, we don't have to use most. He is the strongest boy in the class. This is totally fine. So you should avoid it. Yes, Aditya, were you saying something? No, ma'am. All right. Now comparison using more and most. So we already studied where do we use ER form. When we are using comparative degree, we generally use ER form. Okay, when we are making comparison between two persons or two things. Now where do we use more and most? It is related to the sound. It is related to the syllable. Means
if our adjective is of single sound, if it is of single syllable, for example, tall, sweet, and hot, we can say, or fat, these all are just single sound, एक ही sound है वहां पे हम use कर सकते हैं er and est form for comparative and for superlative respectively. But अगर आपका word है, if your adjective is something like this, beautiful, so आप वहां पे Geeta is beautifuler than Sita. You can't do that. Why? Because ये जो word है beautiful, because ये जो word है beautiful, ये क्या है? This is polysyllabic. This word is polysyllabic. Poly means many. इसमें क्या है? एक से ज्यादा sound है. Beautiful. We have 3 sounds here. हमारे पास यहाँ पे three sounds हैं, तो इसमें हम er वाली फॉर्म यही नहीं यूज करेंगे, ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे यूज होगा more and most for comparison. Let's take another example. Clear? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. all right, single sounding word and polysyllabic words. Let's move. So let's summarize these rules now. So the point number 1, monosyllabic adjectives. Monosyllabic adjectives के लिए what we do, we normally add er and est. Now there is another rule. If your monosyllabic adjective is ending with e, we normally add r and st. If it is ending with consonant, for example, this big here, if it is ending with consonant and before consonant we have one vowel like I, G is a consonant and I is a vowel, then हम कैसे करते हैं, जो consonant होगा वो double हो जाएगा. So it is doubled here and er will be added. It is doubled here, double G and est has been added. So that is the rule. Okay, look at this one. Hi. So we have normally added er and est. यहाँ पे हमने डबल नहीं किया है. Why? Because H कॉन्सोनेंट तो है, बट H से पहले जो G है वो कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है. अगर यहाँ पे वोवल होता बिग की तरह तो इसको भी हम डबल G कर देते, डबल कर देते. All right? Yes. Yes, Vedant. मैम जैसे मैम यहाँ पे मैम ये रूल है मैम, मैंने इसमें बहुत बार देखा है कि मैम जैसे बिगर है तो मैम जी से पहले मैम हमारा वॉवेल है तो मैम वो बिगर हो जाएगा. मैम जैसे मैम वर्ड है सीलिंग, मैम CEI, तो मैम वहाँ पे L के बाद फिर से I आ रहा है, इसका मतलब मैम वो L डबल होना चाहिए ना फिर. कौन सा वर्ड? सीलिंग. यस मैम. सीलिंग को आप ये बताओ मुझे वेदांत, आप कंपेयर उसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाओगे कैसे? मैम वो नहीं हो पाएगा. लिसन, वो एडजेक्टिव नहीं है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द होल वर्ड. कि जितने भी वर्ड्स हैं दुनिया में अवेलेबल, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम वी आर टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव्स हियर. बिग तो एडजेक्टिव है, सीलिंग कोई एडजेक्टिव नहीं है. ओके, ऑलराइट. सो लेट्स मूव. यस मैम, इसमें लो क्या W कॉन्सोनेंट और O वोवल है, तो उसमें W क्यों नहीं डबल बार हुआ? Okay, all right. Yes, very good point. This one, low, lower and lowest. Listen, जो हम rules करते हैं ना, वेदांत, this is for वेदांत also, and अभी किसने क्वेश्चन पूछा? आर्यना ने. All right. Normally हम जब rules पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर के या फिर हम किसी भी लैंग्वेज के, rules क्या होते हैं? वो मोस्टली चीजों पे अप्लाई होते हैं. They mostly apply to 95 to 99% of things. All right, but exceptions are always there. आपने स्टार्टिंग से जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है, पहले आप एक रूल पढ़ते हैं जो जनरली चीजों पे अप्लाई होता है, उसके बाद आप एक्सेप्शंस हमेशा पढ़ते हैं ना. कुछ चीजों में वो रूल्स नहीं अप्लाई होते, वहां पे कुछ अलग तरह की चीजें होती हैं. ऑलराइट, सो कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं. ओके, यस मैम. ऑलराइट. ओके, नाउ look at the point number 3. So monosyllabic adjectives which end with y, जो y से end होते हैं, उनमें वो कौन सी फॉर्म लिखते हैं? IER की and IEST की.
For example, happy, we will remove the Y and we will add IER for comparative and IEST for superlative. All right. Wealthy, wealthier and wealthiest. Is this clear, students? Now Yes, let's ma'am. Yes, ma'am. move to the rule number 4 for monosyllabic adjective. And what is the meaning of this murky? This word murky, I don't know who added this. I didn't make this slide. Let me just Google it right now. I will tell you. Just give me 1 minute. Because these slides, na, students, we are not making this PPT on our own. We have to get it prepared from other teachers who have been assigned this job. ये PPT जो होती है हम खुद नहीं बनाते, हम इसमें थोड़े बहुत changes कर सकते हैं. We are not allowed to make PPT on our own. Murky. It's dark and gloomy. For example, Ma'am, dark and gloomy. dark and gloomy. The sky was murky. Dark and gloomy. Okay. So Okay, ma'am. let's move to the point number 4. Red. So monosyllabic adjectives ending with a single consonant preceded by a vowel take ER and EST in comparative. जो single consonant से एंड हो रहे हैं कॉन्सोनेंट से एंड उनसे पहले क्या है हमारे पास एक वॉवल है तो वहां पे डबल हो जाएगा ER फॉर्म आ जाएगी एंड EST. हॉट, hotter and hottest. That's it. Now let's look at the rule number 5. 5 का ये पॉलीसिलेबिक के लिए सिर्फ एक ही रूल है. This is very simple. We will add more and most. You just have to identify which one is monosyllabic and which one is polysyllabic. Monosyllabic के साथ ER और EST and polysyllabic के साथ more and most. That's it. Okay. For example, proper and beautiful. We have 2 sounds in proper, so we added more proper, most proper, and beautiful. We have 3 sounds in beautiful, beautiful. So this is polysyllabic. We added more and most for comparative and superlative. Excuse me, ma'am. Yes, Vedant. Ma'am, so instead of learning the words, ma'am, I noticed that, like, ma'am, in the words, ma'am, in which, ma'am, before consonant vowel is there and the consonant doubles. So, ma'am, when we break them, ma'am, like red is there, so, ma'am, redder. Ma'am, so first also D comes and later we break, then also D comes. But like low, we break lower, so, ma'am, in lower ma'am, W is not repeated by breaking it. Yeah, I guess Aryana asked the same question just 2 minutes Yes, ma'am. ago. Aryana was also Yes, ma'am. also asking the same question. That's what I was telling you. That same rule cannot apply to each and everything. These are just the general Ma'am, through rules. sound, ma'am, W is not repeating through sound. Hmm. Ma'am, but these words are repeating, ma'am, while saying, ma'am, like redder. Yes. Ma'am, so in red also D is repeating and der, so D are there also it is repeating. Yes. Yes. Ma'am, but in